startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. रोटी कपड़ा मकान मकान वाला फैक्टर है जो हर एक की एक ज़रूरत है. Who are your co-founders and how did you get a co-founder? मुश्किल होता है पार्टनरशिप में काम करना. Market is the main playground for learning. Builders और developers को cater कर रहे हैं, real estate agents को cater कर रहे हैं, legal services providers को cater कर रहे हैं, architects और interior designers को cater कर रहे हैं. Customer तो है ना, market में customer है. We act as a facilitator. How are you different from a typical real estate की दुकान? We're using systems, we're using processes, we're using technology. और कहते ये हैं कि there are about 51 industries जो कि real estate sector के साथ जुड़ी हैं और इन सब को हम लोग technology based solutions provide करें ताकि वो अपने business को effectively और efficiently run करें. Assalamu alaikum, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है and we're back with another podcast after a little while. The last podcast was in Lahore and it's been quite a while since then. Today I have a very special guest who I have been following for a while and he's doing amazing work. He was at Future Fest as well and then again meeting the same community, तो वहाँ भी मुलाकात हुई. I have Atif bhai with us. Atif Arafin, who is the co-founder and COO at Landtrack. And again, thank you so much for coming, Atif bhai. Thank you, Saad, for having me today and looking forward to, Thank learn you. more and spread I'm actually what I have. excited because so you're into property and property और technology को लोग मिला रहे हैं, लोग उसको include कर रहे हैं, but these guys are actually doing it full time and it's very insightful to learn from them कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में, पाकिस्तान जैसी मार्केट में किस तरह एक टेक्नोलॉजी बिजनेस को एक कन्वेंशनल मार्केट में घुसा रहे हैं. क्योंकि अगर हम मोबिलिटी में देखें तो री इन्वेंट कर दिया टेक्नोलॉजी ने उसको पूरा, लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकल चीज़ है, जो ऐप के थ्रू इतनी नहीं चलती, उसमें किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको आप कर रहे हैं. So I want to learn about that. But before we start off with that, I want to learn a little bit about you, where you started off, how you started off, and how did this idea become into reality? Perfectly fine. So I have a very it's been a very small journey so far. I started this in 2018 and I graduated from Institute of Business Management, did my bachelor's in majors in marketing. Then I was enrolled in online courses that I did in data sciences and big data. So basically, since it's our another family venture and we faced few losses in the real estate industry, like there are few documentation errors that we gone into and now we are facing litigation matters. So we saw this that there's a huge gap when it comes to the awareness of the documentation of the valuation, since we have faced these difficulties and we were sure that a lot of people will be facing the same situation. So we laid the foundation of landtrack.pk in 2018 and we started off with the documentation, the legal aspect, and we started to make it more awareness, that how to go about when you're looking out and searching for a property. So we came into this industry and since then we've been, it's been a roller coaster ride, going. I mean, you started off in 2018. Yeah. Pre-COVID. Pre-COVID. 2 साल तो वैसे ही. 2 साल, 1.5 साल जो है definitely. We've been looking at the COVID time कि we've got an edge कि हमने foundations real estate की जो roots हैं वहाँ जाकर हमने एक जायज़ा लिया कि यार एक्चुअल में जो रूट कॉज है वो है क्या.
you know it's the ecosystem जो कि बहुत गैप है उधर. इकोसिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं और जब हम गैप की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा एंकर है इसके अंदर जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री और जो अवेलेबल जो चीज़ें चल रही हैं उससे बहुत फासला है. देयर इज अ ह्यूज गैप एंड यस देयर आर अ लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स एंड जिन्होंने मार्केट के अंदर एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस और लोगों को उस टेक्नोलॉजी पर लाने का बहुत अच्छा काम किया है ताकि लोगों को कन्वीनियंस मिल सके. एंड हाउ वी लुकिंग एट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, एक तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है. हमारी पॉपुलेशन, हमारे पास हमारे मुल्क में डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लोगों को छत तो चाहिए, रहना तो है ही, रहना तो है ही. रोटी कपड़ा मकान. तो इंसान के जो फंडामेंटल्स हैं रहने के, जीने के, इस दुनिया में रहने के, वैसे जीने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, सांस हवा खाना ज़रूरी है, लेकिन हमें और अपनी नेसेसिटीज़ बनाई हुई है. ऐसे ही. तो रोटी कपड़ा मकान, हाँ, मकान वाला फैक्टर है जो हर एक की एक ज़रूरत है और उसको आप केटर कर रहे हैं. बिल्कुल. ये आइडिया came from your own problems and you tried to solve it and now it's a running business, a flourishing business. Who are your co-founders and how did you get a co-founder? क्योंकि co-founders usually मुश्किल होता है कि स्पेशली दिल्ली वालों में ना कि वो हो गई एक ही बंदा होता है, लाइक मुश्किल होता है पार्टनरशिप में काम करना. ये तो है कि यू नो इट हैज़ बीन अ वेरी लोनली जर्नी. यू नो आप पहले आइडिया को ख़ुद कंसीव करते हो, फिर आप उस आइडिया के तहत आप अपने साथ उन लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ते हो. तो इट हैज़ बीन अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू नो. और चूँकि एक ख़ुद प्रॉब्लम से हम गुज़रे हुए हैं तो हमने शुरू में वी वर नॉट यू नो आउट के हम लोगों को ऑन बोर्ड करें. पहले तो हमने कहा कि ख़ुद इसको चीज़ों को लेके चलें, पहले समझें तो सही. चूँकि राइट फ्रॉम द ग्रेजुएशन, चूँकि अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू द रियल एस्टेट आपको यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, यू नो. तो कुछ ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज किए जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, टोरंटो बेस्ड हैं वो, कुछ यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं. तो वहाँ से नॉलेज हासिल करके फिर मार्केट इज़ द मेन प्ले ग्राउंड फॉर लर्निंग. अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो मार्केट आपको सिखाती है. और ख़ास तौर पर जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं, राइट. अब व्हेन वी सी कि देयर आर टू थिंग्स, कि एक तो सप्लाई साइड है एंड देन इज़ द डिमांड साइड. हम चूँकि डिमांड ओरिएंटेड की बात करते हैं कि यार हाउस शॉर्टेज है तो वो एक एंड कंज्यूमर को है, बट उससे पहले इट ऑल स्टार्ट्स विद B2B, दैट इज़ द सप्लाई साइड. फिर सप्लाई साइड के अंदर हम बिल्डर्स और डेवलपर्स को केटर कर रहे हैं, हम उसके अंदर रियल एस्टेट एजेंट्स को केटर कर रहे हैं, फिर लीगल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को केटर कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को केटर कर रहे हैं, और इन सब को हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें ताकि वो अपने बिजनेस को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करें. और इवेंचुअली ज़ाहिर है व्हेन द कस्टमर तो है ना, मार्केट में कस्टमर है, लेकिन कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना, दैट इज़ व्हाट आवर प्लेटफॉर्म डज. और फिर हम वी डू द राइट मैच मेकिंग, वी एक्ट एज अ फैसिलिटेटर and do the actual matchmaking when it comes to knowing the problem that an end consumer is facing and getting it matched to the right services offering on our platform. Awesome. So you guys call yourself a prop tech company. Yeah. How are you different from a typical real estate की दुकान, and where's the technology factor and what exactly is prop tech? तो पहले बता दें prop tech क्या है and then आप लोग कैसे. बिल्कुल. अच्छा, ये प्रॉपटेक जो है ये एक बज़वर्ड कहलाता है. जैसे हम देखते हैं फिनटेक है, दैट इज़ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर हेल्थ टेक है. कोई भी इंडस्ट्री जब टेक्नोलॉजी उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट प्ले कर रही होती है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उस बिज़नेस के ऑलरेडी अंदर स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा हो रहा है, तो वो जुड़ जाता है उसके साथ टेक्नोलॉजी का नाम. प्रॉपटेक
के अंदर जो है तमाम स्टेक होल्डर्स, ज़ाहिर है बिल्डर्स की कैपेसिटी में, एजेंट्स की कैपेसिटी में, लीगल प्रोवाइडर्स हैं, फिर आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स हैं, ये सारे जो हैं ये दीज आर की स्टेक होल्डर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और कहते ये हैं कि देर आर अबाउट 51 इंडस्ट्रीज़ जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसके अंदर आता है। 51 है या मेरे ख्याल या जो ज़्यादा नंबर है या 71 है। फॉर एग्जाम्पल यू नो फर्नीचर इंडस्ट्री, आपको फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर कहाँ रखेंगे? किसी स्पेस में रखेंगे, स्पेस चाहिए, स्पेस ज़ाहिर है पहले परचेज करेंगे तो पहले वो बिल्टअप होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए। तो these are all you know different industries that are linked with the real estate industry overall. How we're different from a traditional real estate agent, we're using systems, we're using processes, we're using technology कि वो एक तो ह्यूमन, डेफिनेटली ह्यूमन का तो पार्ट आता ही है, लेकिन ह्यूमन का काम कब आता है? तब एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन आती है। लेकिन उससे पहले जो काम है, फॉर इंस्टेंस हम ये देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लीड जनरेट कर रहे होते हैं लोग, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, चैटबॉट्स आर इनेबल्ड। तो वो चीज़ एक आम रियल एस्टेट एजेंट खुद भी कर सकता है, लेकिन वो उसको उस तरह की अवेयरनेस नहीं है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ हम वो अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं कि यार दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, एंड यू नो अपना बेस बढ़ाओ, अपना क्लाइंट बेस बढ़ाओ, अपना एक सप्लाई चेन बेस बढ़ाओ। तो हम तो इनेबल कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को, ख़ासतौर पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, कि वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने करंट बिजनेस को स्केल कर सकें। So you've defined what PropTech is and how you guys are different from companies. What kind of services are you guys offering? If you talk about precisely your physical firm. See, when it comes to our services for B2B, when it comes to B2B, our main go-to is builders and developers. And builders and developers, in order to get their project up and running, first they have to find the land, right? And when it comes to the land, there has to be a feasibility, right? So what we're trying to enable them is to tap those areas where there is an actual demand and supply gap. And when we talk about the demand and supply gap, we have to look at what that area is actually offering, right? What is the preference? What income bracket does that individual who's living can give as a monthly income, Right. as an installments to that developer? So we're giving like data backed decision making for the developer, and then you know moving on their project management use cases, like they want to get their designing visualization done, you know, they have to make their projects smart, Right. and energy efficient. सोलर का किस तरह से कैपेसिटी होगी, क्या होगा, बिजली कैसे कम से कम होगी। तो ये सारी चीज़ें, पहले क्या होता था, बिल्डिंग बन जाती थी, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते रहते थे कि जी इसकी कैसे करें। अब नाउ द टाइम इज़ कमिंग कि आप बिल्डिंग के बनने से पहले जितना आप उसको डिजिटल ट्विन, बेसिकली व्हाट द टर्मिनोलॉजी इज, उसके अंदर आप डिजिटल उसका ट्विन बना लो, और उसके अंदर आप उसके एनर्जी एफिशिएंट उसको जितना बना सकते हो, देयर आर सॉफ्टवेयर्स, BIM इज़ वन ऑफ इट। फिर उसके अंदर जो है आप, दिस इज़ द टाइप ऑफ सर्विसेज दैट वी आर ट्राइंग टू इनेबल एंड मेकिंग देयर लाइव्स ईजियर। फिर जाहिर है चैटबॉट्स आ गए कि आप कैसे अपने कस्टमर को ऑटोमेटेड रिप्लाईज दे सकते हो। आप उसको डेटा इनपुट करो, इफ़ यू आर सेलिंग अ प्रोजेक्ट एंड there is a website or some social media advertisement, and any user can interacting with that person, he can message and get automated replies. And artificial augmented reality and virtual reality, keeping that in view, he can actually
visualize and experience how the project would actually be. You're right. And that's very true. And with all the technologies, even in the past 2 months that we've gotten, including ChatGPT, Yeah. the amount of data that we have, just like पहले तो चलो data था सब कुछ हम बस Yeah. ढूंढना था Yeah. अब तो वो भी नहीं करना हाँ. and if we're still not using these assets that we have, these resources that we have, तो बस पागलपन है कि किस तरह का आप रिसर्च कर सकते हैं या डेवलपर कैन एक्चुअली पुट इन कि जी मैं इस सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मुझे क्या मटेरियल इस्तेमाल करने चाहिए. आई वेंट टू पीसी मालम जब्बा. Okay. एंड इट्स अ नॉर्मल जिस तरह हमारे यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है वैसा है. सही है. अब पत्थर जो है इट्स अ वेरी गुड इंसुलेटर और लाइक इट ट्रैप्स अ लॉट ऑफ कोल्ड. अब बाहर बर्फ है. मुझे बाहर कम ठंड लग रही थी अंदर ज़्यादा. अंदर इवन दो हीटर चल रहे हैं पीसी है. तो we're not trying to improve ourselves at all. And if we don't, आराम से कोई एक स्टार्टअप ने आना और उड़ा के चले जाना. So getting connected with people like Atif bhai and Landtrack, companies similar, it's so important now because we have to change. We have to cope up with the rising demands, with the construction costs, different construction materials. All of this is so important in this society now. Definitely. Especially with climate change. With the climate change. And दुनिया नहीं रहनी ना 2030 तक आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा लेकिन दुनिया नहीं खत्म हो गई तक तो बस मजा आ जाएगा. तो इसी को करने के लिए we did a convention at Expo Center. I remember I went. Yeah. So please do tell me about that. How did that go and what was the agenda behind doing an event? Well, the main agenda of after spending 4 years starting the journey in 2018 and looking things very deep down and closely कि भाई what's the way forward? Yeah. Keeping in view the uncertainties and everything. So we came up this कि यार ecosystem को एक जगह पे इकट्ठा करें. And we started off with the PropTech convention and the main theme was unlocking PropTech to boost the real estate industry. कि how the technology advancements is actually playing a pivotal role in order to streamline the existing problems. And it was very funny that when we used to go to meet different people, especially builders, developers, they were like, what is actually PropTech? How would that make our project sell more faster? My first question. Yeah. कि भाई ठीक है हाँ बहुत अच्छी बात है मेरा प्रोजेक्ट का माल कैसे बिकेगा. Their main first question is ROI दिखाओ. But you see हम एक ऐसे टाइम्स में हैं जहाँ पर अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जब रियल एस्टेट की बात करते हैं ना तो लोगों के जहन में आता है क्विक मनी. There is a lot of quick money. Yes. But now it is the time of value addition. There is money, no doubt. But what value is being added? And that value addition के लिए ज़ाहिर है मेहनत करनी है. You have to think out of the box. So then alhamdulillah we gathered a huge turnout. हमने 24 December को ये किया Expo Center कराची में किया with conjunction with Build Asia and Abad All Builders Association was our support partner in this. And basically there were two segments. First segment was smart, safe, sustainable building technologies as to how to make things more smarter, how to make buildings more smarter. So uske andar we had different segments, we had reputable engineers, F&D, from fire safe, we had Haseen Abhi, कि कैसे आप हम देख रहे हैं कि भाई आग लग रही है भाई why आप उस बिल्डिंग के अंदर डिज़ाइन ही ऐसी करो कि भाई they're like preventive और measures ऐसे हों. तो फर्स्ट हाफ was on to this. फिर इसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग की भी गुफ्तगू हुई. मटेरियल कैसे आप इस्तेमाल करें जो कि लेस कॉस्टली, चूँकि कॉस्ट पर कंस्ट्रक्शन तो बढ़ी जा रही है, उसमें आप कैसे इस्तेमाल करें. और सेकंड हाफ वाज PropTech
कि how to go about, you know, Right. जिसके अंदर we enabled real estate investment trust, REITs, जिसमें Arif Habib Dolman REIT was with us, TPL, Veritas REIT, and other major REITs was with us, in order to, you know, like how to go about in REITs and why. Yeah. In order to safeguard the investments and it's the people's money. Yeah. Right. And then, you know, like these augmented reality, virtual reality, like you have to experience, and you know, we had these experience zones with us over there. So alhamdulillah, it was a huge success in order to, you know, It was. grab all the ecosystem's attention and to bring them in one place. And it was, I believe that it was a very, it is very beneficial for all the stakeholders who are actually trying to work in the real estate sector. And one important thing that what we are actually trying to do now is to educate the youth. We say that, you know, there are like 60% of young generation in our country, and IT, we hear these buzzwords, you know, Yes. IT, you know, technology, but how to give those young individuals a direction. And we were just having a conversation about that. So I want to Yeah. know what कि इसमें क्या है, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी और यंग लोगों को मिलाते हैं तो हमारी सोसाइटी में एटलीस्ट कोई सेंस नहीं बनती. And how are you trying to match them? क्योंकि ये वाला मैच it even I was surprised at first कि जी ये कैसे होगा, क्या फ़ायदा होगा, is it just a marketing stunt or is it actually going to bring value to the society? क्योंकि अगर अमेरिका में होता I could have bought property, I would have had a credit score at 20. But if I'm in Pakistan, property prices are skyrocketing. I can never go to a bank and even open a company account. वो भी पंग करते हैं, लोन की तो बात की बात है. And इस situation में कैसे? But there's again opportunities everywhere. So I want to hear your 2 cents on that. कि कैसे कर रहे हैं? Well, my mentor says that there are opportunities in the crisis, you know. And crisis is like, you know, a problem is gold. Problem is gold. And you see, like in the real estate industry, as we like mentioned earlier, we discussed earlier that the age is mostly 35, 40, 45. The people who are actually working. We need the young blood in this industry. Young blood in order to work and strive in this industry, keeping in view the technology advancements. So what we at Landtrack are doing is different boot camps. We are inviting all the final year students, different universities, different colleges, and we are executing a real estate 101 course with those individuals and going from the very grassroots level as to how to go about and start their career in this industry. What are the do's, what are the don'ts in this industry? Because business ethics is the rule of thumb in order to, you know, like do anything. Right. So वो business ethics अगर आप starting से ही उनके अंदर plug in कर दो, and value addition is the only gateway. Quick money times are gone, you know, especially in real estate, it's gone. Value addition का time है. तो हम उन बच्चों को ख़ास तौर पर रियल एस्टेट की एजुकेशन दे रहे हैं कि आपको अपना करियर कैसे इसमें शुरू करना है, आपको काम चाहिए, नॉलेज हमारे पास हम उनको देते हैं, सिस्टम्स हमारे पास बने हुए हैं, प्रोसेसेस हमारे पास बने हुए हैं. दे जस्ट हैव टू पुट इन देयर मैन आवर्स. उनको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी कुछ. और डेफिनेटली जैसे जैसे वो एक कैपेसिटी पे पहुंचते हैं, उनको अपना उस खुद के टाइम के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है. और दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपटेक एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि इकोसिस्टम है,
एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर यंग जनरेशन का आना और जो मार्केट के अंदर रियल एस्टेट के अंदर ख़ास तौर पर ऐसे बिजनेस यूज़ केसेस मौजूद हैं जो कि हम डेवलप कर सकते हैं. वी कैन डेवलप आवर ओन सॉफ्टवेयर्स, यू नो. और जैसे इंडिया के अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं. लास्ट ईयर 2021 के अंदर देयर आर लाइक 900 समथिंग स्टार्टअप्स registered in prop tech space. 900 startups. नहीं, नहीं, सिर्फ 900 सिर्फ in 900 2021. स्टार्टअप्स सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आए मतलब हैं. टोटल तो ज़्यादा ही होंगे. 2021 की बात कर रहे हैं आप सिर्फ. मैं 2021 की कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ. एंड ड्यूरिंग कोविड जो लोगों ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो एडवांसमेंट्स आई हैं उसको किस तरीके से इंडिया चूंकि हमसे ज़ाहिर है कितने थोड़ा साल सा आ गया मैंने कुछ. अच्छा चलो थोड़ा सा ही आगे सही, लेकिन वो जो आगे भी जो है ना, अच्छा आगे है तो डेफिनेटली हम फिर क्या हुए, हम फॉलोअर हुए ना. Right. तो वो कभी ना कभी यहाँ तो चीज़ आएगी ना. Definitely. उसकी तैयारी तो करनी है. तो उसकी तैयारी जो उस टाइम के लिए करनी है वो ज़ाहिर है इस यूथ नहीं करनी है जो कि हमारे पास मौजूद है. दिस इज़ द रॉ मटेरियल दैट वी हैव, यू नो. लेकिन हमें डायरेक्शन देनी है उनको. तो what are so if someone's watching this podcast who is below 25, let's say, and is in university or उस वाली age bracket में, what's your message for them right now? Like direct value वाला है, vague नहीं. मैं तो यही कहूँगा कि रियल एस्टेट ज्वाइन करें. ठीक है. और रियल एस्टेट के अंदर जब हम देखते हैं वही बात है कि मकान, द शेल्टर इज़ व्हाट एवरीबडी नीड्स. एंड एक जो विजन रियल एस्टेट में आता है कि यार ये एक ब्रोकरेज हाउस है या क्या है, रियल एस्टेट के अंदर एक विजन हमेशा ये होता है कि यार आप किसी को किसी के छत दिलाने में उसको फैसिलिटेट कर रहे हो. इट्स अ नोबल कॉज, राइट. और द यंग जनरेशन who are in their 20s, 25, they need to explore and explore their passion, right? You know, if they're passionate about, and you know, see, like when it comes to real estate, you have to meet different kinds of people, right? You need to have that an extrovert type of skill set, different culture, you know, and that learning from different people is another breakthrough that a young individual would actually like, you know. फिर exploring है, traveling है, areas हैं. कराची कितना बड़ा है यार आपके, तीसरा बड़ा मुल्क है. कराची कितना बड़ा है आप. और हार्डली a 25-year-old उसने पूरा कराची शायद हार्डली देखा हो. वो मैंने कभी नहीं देखा, है ना. तो ये है कि रियल एस्टेट कैन मेक यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस. ये एक है. अगर आप घूमने का शौक है आप इंडस्ट्री क्या है. स्टार ट्रेक की पिच लग रही है मुझे, गोइंग टू द फाइनल फ्रंटियर्स. क्या होता है सितारों पे. और टेक्नोलॉजी का जाहिर है दे आर मोर यू नो लाइक एडवांस्ड, दे नो हाउ टू गो अबाउट. और उसके अंदर से वो रास्ता निकालते रहे अपना. इफ आई आस्क फॉर डायरेक्टली के जैसे, so if I try to pitch what's happening here, we have a center where anyone who comes in and leaves after a year is going to be earning 100,000 rupees a month through different courses that we're offering and through different programs that we have. If people actually follow them, then they guaranteed के जी लाख रुपए कमाएंगे, वरना हम उनकी सारी फीस वापसी कर देंगे. If I pitch that to you, आप अपने आप को pitch कैसे करेंगे? See, 100,000 in a year, that the institute is saying, I mean in real estate. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं लाख रुपए वैल्यू का बात नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि आपकी पिच क्या है, वैल्यू क्या है एंड में, कि जी एक साल आपके साथ कोई गुजारेगा या एक साल आपके या रियल एस्टेट में आ गया, रियल एस्टेट में क्या करेगा, तो एग्जैक्टली बताएं. रियल एस्टेट के अंदर we're followers, we're not thinkers. That's something that हम दिल्ली वालों में चलो कीड़ा है, कचरा देख के अपॉर्चुनिटी दिखती है, या रोड टूटा हुआ देख के कहते हैं यार रोड को फिल कारपेटिंग की कंपनी खोल लेते हैं. लेकिन typically if people really honestly दिल असल में दुखता है, क्योंकि the areas you go in I've gone to areas in Korangi which are better than Tariq Road, and there's so many people are homeless, people are
hungry, they don't have work. लेकिन हम रोड पे देखते हैं जितना काम दिखता है, पौधे लगाने का काम दिखता है, रोड सही करने का काम दिखता है, पेंट का काम दिखता है, सब काम होते हैं बिल्कुल और वो नहीं हो रहे होते. तो people need direction. And my suggestion would be, if you're doing this podcast, then again you are doing it for direction. So what's your direction वाली pitch? देखिए डायरेक्शन एक होता है शॉर्ट टर्म वैल्यू, एक होती है लॉन्ग टर्म वैल्यू. अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू की जब हम बात करते हैं ना, तो वी नीड प्रोडक्ट्स दैट इज ड्राइविंग द रियल एस्टेट इकोसिस्टम. वी नीड सॉफ्टवेयर्स. We are working on different data-driven decision-making softwares, and we would like जो students on a longer vision, जो कि AI पढ़ रहे हैं, data sciences पढ़ रहे हैं, वो उस market को tap करने के लिए उस parameters पे भी सोचें कि यार how to build that local products, और उसके अंदर जो है वो लोगों को लेकर आएँ, काम करें. मार्केट बहुत है उसकी. फिर ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म की जब बात करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज सेलिंग. यू हैव टू बी गुड एट सेल्स, राइट? इन ऑर्डर फॉर सेलिंग यू नीड टू know the right knowledge of the product. And yes, when we working with different builders and developers, we will be giving that product knowledge to those individuals जो कि इसमें आना चाह रहे हैं. And definitely if they're good at selling, if they be good at it, they can scale their career. That's the pitch I was looking for, and I've gotten it. And it's amazing what you guys are doing. I absolutely love it. तो land track के काफ़ी सारे segments हैं, काफ़ी सारे products हैं. Do define a bit about that. At LandTrack, we are working on different platforms. We have LawTrack, that is dealing with legal and valuation, that solves problems in the documentation aspect. At LoanTrack, we are facilitating the end consumer who wants to get mortgage. And similarly, a builder or a developer who's looking for finance their project, and then there are REITs that comes under this ecosystem. Then there's design track, onto which we are facilitating architects and interior designers to generate businesses for them. And then eventually there is data track, that is facilitating the end consumer to take data driven decisions in the real estate business, that what and why of a purchase, and similarly this goes to a developer. What and why, similar case, what's the preference of that particular area. And this is the whole ecosystem that we're trying to enable, and we would like that more people should actually look the real estate industry on a very different level, keeping in view the technology advancements, keeping in view more products, more localized built up products. And I believe that this unconventional market will eventually be more organized, and this is what we really need being in this industry. So looking at the market right now, बहुत सारे problems हमने generate बताए, बहुत सारा कुछ किया. कोई ऐसा बंदा है जो solution पे काम करे. Like me, I actually raised some money and I was working on the plastic housing solution. So I actually have bricks that are made from plastic, which are interlocking bricks, and you can make a house in 4 days, including the base. तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके पास है या कुछ सिमिलर कुछ और कर रहा है, बहुत सारी रिसर्च हो रही होती है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा गो टू मार्केट प्रोडक्ट है बट जो पैसा है मार्केट में या जो है इनोवेशन है, किसी के पास स्टार्टअप की स्ट्रैटेजी नहीं है, हाउ डू दे गो अबाउट इट, एंड आर यू पीपल हु कैन एक्चुअली फैसिलिटेट दैट? कि अगर कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टेक इंडस्ट्री में, कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या कुछ इनोवेशन लाना चाह रहे हैं, कोई आईओटी प्रोडक्ट है, वो आपके पास आ सकता है क्या? Definitely,
marketplace that we have built, the platform in itself, we act as a facilitator. And the services providers can definitely, with whatever product or service that they have, right, with innovative product, yes, that's a plus. And catering directly to the B2B, knowing their target audience, Yeah. whether in the construction industry, definitely we have a roadmap that we actually give those individuals as to what strategy and how to go about in order for them to use their product or service. I would genuinely ask everyone who Hmm. is interested in investing, and also people who think they have an idea, to ask for suggestions from Atif bhai. Reach him out. Sure, my LinkedIn. हाँ, तो LinkedIn तो बल्कि हाँ डाल हाँ चुके हैं, बस सही तो है. all of your credentials we're gonna put it in, and Okay, good. people really should reach out, क्योंकि until you start a conversation with a person who actually has insights, we can't really get anywhere. You need to know the right person, and if you don't know the right person, you might know someone who knows the right person. तो वो कहते हैं ना, I'm friends with the king because my friend's friend's friend is the king. Is the king. तो म्यूचुअल्स के थ्रू काम हो जाता है, तो ये म्यूचुअल है आपके, और ही इज योर डायरेक्ट कनेक्शन. प्लीज ऐड हिम, talk to him. Atif bhai is a great guy, he's a great friend. Thank He's you. very kind, and I wish you best of luck with Land Track. I have some things in mind that I want to discuss in private as well, but definitely I will get insights from him, and I should looking forward definitely to it. ask you to get to do that. Thank you for coming. Thank for you your very time. much, Saad. I It hope to was work with you also, inshallah, and look at you actually reaching the stars, inshallah. Thank you very much, and it was great and lovely having discussion Thank you so on a much. Friday morning with you. Awesome. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.